Now in this example, in a given equation, we have two arbitrary functions f and g. हमारे इक्वेशन में अभी दो आर्बिटरी फंक्शंस है f एंड g. इसे हमें एलिमिनेट करना है. तो दो आर्बिटरी कांस्टेंट्स है तो हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा. यस. So how to obtain this? So first we differentiate this equation 1 partial with respect to x. हमारे इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है यक्स एंड टी. तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू यक्स से. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to x. So partial derivative of z with respect to x is a dou z upon dou x. f आपका x का फंक्शन है तो f का डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x प्लस आयोटा टी. x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 प्लस g का डेरिवेटिव g इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x. सो डेरिवेटिव ऑफ g डिनोट किया जाएगा g डैश of x minus iota t into derivative of x minus iota t with respect to x is 1. So I denoted by equation 2. फिर से हमें इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x से. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x. So partial derivative of dou z by dou x with respect to x is dou 2z by dou x square. Derivative of right side function, derivative of f dash is f double dash x plus iota t into once again derivative of x plus iota t is with respect to x is 1 plus derivative of g dash is g double dash of x minus iota t and derivative of x minus iota t with respect to x is 1. So हमें क्या मिलेगा यहाँ पे dou 2z by dou x square is equals to f double dash x plus iota t plus g double dash x minus iota t. इसे हम डिनोट करेंगे इक्वेशन 3 से. तो यहाँ तक हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 1 को पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें dou z by dou x मिला. फिर से इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें dou 2z by dou x स्क्वायर मिला है. इन अ सेम वे वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू t ट्वाइस. सो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to t. So partial derivative of z with respect to t is dou z upon dou t. In the right side, f is the function of t, so we denote the derivative of f with respect to t is a f dash of x plus iota t into derivative of x plus iota t with respect to t. सो t का डेरिवेटिव होगा 1 मल्टीप्लाई में ये कोएफिशिएंट आयोटा है सो इनटू आयोटा प्लस डेरिवेटिव ऑफ g इज g डैश ऑफ x माइनस आयोटा t इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस आयोटा t विथ रेस्पेक्ट टू t. डेरिवेटिव ऑफ दिस t is 1 into coefficient minus iota, so I get here minus iota. So this is our equation number 4. Differentiate equation 4 partial with respect to t. So differentiate equation 4 partially with respect to t. So partial derivative of dou z by dou t is dou 2z by dou t square is equals to again derivative of f dash is f double dash x plus iota t into derivative of x plus iota t with respect to t is iota. Already here iota into iota is iota square plus derivative of g dash
is g double dash of x minus iota t into derivative of x minus iota t is a minus iota. Here are already minus iota into minus iota is minus iota square. Minus into minus get plus. So here in both this term here iota square, so I take out iota square common. दोनों टर्म में आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर कॉमन लेंगे. सो आई गेट हियर डो टू जेड बाय डो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर into in a bracket f double dash of x plus iota t plus g double dash x minus iota t. So I denote it by equation number 5. अभी हमें देखना है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5. यस, इक्वेशन 3 f double dash x plus iota t plus g double dash x minus iota t is a dou 2 z by dou x square. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि use the equation 3 in a equation 5. Yes, use the equation 3 in a equation 5. Yes. So therefore equation 5 becomes, क्या हो जाएगा इक्वेशन 5 अगर हम इक्वेशन 3 यूज करेंगे इक्वेशन 5 में, तो LHS ऑफ इक्वेशन 5 रिमेन्स एज इट इज डो टू जेड बाय डो टी स्क्वायर is equals to this iota square as it is, and see this is from equation 3 is a dou 2 z by dou x square. So dou 2 z by dou x square, and we know iota square value is -1. So therefore dou 2 z by dou t square is equals to minus of dou 2 z by dou x square. And if you take this minus term to this LHS, so it becomes plus. So I write it is dou 2 z by dou x square plus dou 2 z by dou t square is equals to 0. This is the required partial differential equation by eliminating the arbitrary function f and g.